हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो गाइस, लास्ट वीडियो में स्पाइडरमैन की इस वाले रेफरेंस फोटो को ड्रॉ किए थे। तो जो भी इसका आउटलाइन वीडियो अब तक नहीं देखे हो वो जाके देख लेना चैनल पर। तो आज इसको कलर करने वाले हैं ऑयल पेस्टल से। तो चलो आप लोग वीडियो को अच्छे से देखो। तो सबसे पहले जो भी आउटलाइन है उसको हमें अच्छे से इरेज कर लेना है। एंड हाँ, जिस भी एरियाज पर रेड कलर होंगे उस एरियाज पे ज़्यादा इरेज मत करना, वहाँ पे आउटलाइन थोड़ा दिखना चाहिए, क्योंकि कलरिंग करते टाइम ब्लैक लाइंस को अच्छे से आप लोग ऑब्जर्व कर पाओगे। मैंने यहाँ पर गलती से ज़्यादा इरेज कर लिया, तो आप लोग ये गलती मत करना। एंड हाँ, इस वीडियो में जो जो प्रोडक्ट मैं यूज़ करने वाली हूँ वो सारे प्रोडक्ट्स मैंने टैग कर दिया है, तो आप लोग जाके चेक कर सकते हो। तो पहले स्पाइडरमैन की आईज में ब्लैक ब्रश पेन का यूज़ कर रही हूँ। अगर आप लोग के पास ब्रश पेन है तो उसे आप लोग यूज़ करो, एंड नहीं तो इस जगह पे ब्लैक कलर पेंसिल का भी यूज़ कर सकते हो। और अगर ऑयल पेस्टल यूज़ करना चाहते हो तो वो भी यूज़ कर सकते हो, बट थोड़ा ध्यान से। एंड नेक्स्ट, रेड एरियाज पे मैं रेड ब्रश पेन का यूज़ कर रही हूँ। तो अगर इस जगह पे आप लोग ऑयल पेस्टल को यूज़ करना चाहते हो तो ऑयल पेस्टल भी यूज़ कर सकते हो, बट उसको ब्लेंड करना है। बट अगर ब्रश पेन यूज़ करोगे तो थोड़ा जल्दी भी होगा और ईजी भी होगा। ओके, तो ब्रश पेन से फर्स्ट लेयर देने के बाद इसको थोड़ा ड्राई करना है, एंड उसके बाद उसके ऊपर, उसी कलर के ऊपर हमें रेड ऑयल पेस्टल को अप्लाई करना है। एंड नेक्स्ट, जहाँ पे थोड़ा डार्क दिख रही है वहाँ पे ब्राउन कलर को अप्लाई करना है। एंड नेक्स्ट, उसके ऊपर ब्लैक कलर को हल्का करके अप्लाई करना है, एंड देन कॉटन बड से राउंड राउंड करके आप लोगों को ब्लेंड करना है। एंड ये वाला ड्राइंग ज़्यादा हार्ड तो नहीं है, तो आप लोग अगर अच्छे से वीडियो को ऑब्जर्व करोगे तो इजीली समझ पाओगे। एंड मैं यहाँ पर आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप दिखाया हूँ, तो वीडियो को आप लोग अच्छे से देखना। एंड हाँ, ब्लेंड करते टाइम थोड़ा ध्यान से ब्लेंड करना, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा प्रेशर की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को बस राउंड राउंड करके धीरे धीरे से हल्के हाथ से ब्लेंड करना है। They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing.
I got all this potential that's deep inside of me, but they hate when you're successful cause they try to be. They sit there being judgmental because you're trying things, and they just want you to settle and do the right thing. So get a good job, don't slack off. Wake up every morning, make a good impression on your boss. Don't do anything that I wouldn't do, and when you're making money, make sure you don't spend it too soon. Fuck that, I'll do what I wanna do. I got a different path from everyone, and that includes you. Who are you to tell me how to live life? In these times it feels like nobody's right, yeah. So I'ma figure out what else we succeed, and then invest all of my time into that and proceed. I need whatever the hell could make me happy, and I don't think you have a clue what could that be. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I think this life could be special if I get rid of the devils. They think that I am a rebel, I think they want me to settle. There's nobody on my level. They think that work is too stressful, I think that work is essential. The grind is all in your mental, and I don't think you understand what I'll go through just to be in control of my life soon. All the negativity, man, I'm immune. I don't really need a mask with all I've been through. I've been making changes for the ages. 5-10 year plans are contagious. I attack that shit, I'm tenacious. And if you ain't, get the fuck out of my way then. Got one life, I won't regret it. I will fight until I get it. I'll look back one day from heaven and say, damn, I learned some lessons. And say, damn, I have no questions. I had fun in every second, and the journey was a blessing, yeah. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing.
तो आइज़ के नीचे जो इस तरीके से ब्राउन शेड्स है उसको देने के लिए मैं यहाँ पर ब्राउन कलर पेंसिल का यूज़ कर रही हूँ। एंड ये कलर पेंसिल आप लोगों को बहुत ही लाइटली अप्लाई करना है, एकदम धीरे धीरे से लो प्रेशर के साथ।
ओके तो गाइस यहाँ पर अभी बैकग्राउंड करने में थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था मुझे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, पहले मैं ब्लैक ऑयल पेस्टल से इसके ऊपर अप्लाई किया एंड देन जब भी मैं ब्लेंड करी तो देख सकते हो किस तरीके से बैकग्राउंड एकदम से ख़राब हो गया। तो आप लोग इस तरीके से मत करना। तो नेक्स्ट मैं इसके ऊपर एक्रिलिक कलर का यूज़ किया, ब्लैक एंड वाइट कलर को अच्छे से मिक्स करके देन मैं इस तरीके से ग्रे कलर को बनाया। तो उसी को मैं इस बैकग्राउंड में अप्लाई किया एंड इस पार्ट का क्लिप भी मेरे पास नहीं है क्योंकि वीडियो ऑन ही नहीं किया मैंने। तो आप लोग भी अपने तरीके से कर लेना इस चीज़ को। एंड हाँ गाइस, इस ड्राइंग को आप लोगों को कैसा लगा ये कमेंट करके मुझे बताना ज़रूर। एंड अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना एंड चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलता है किसी नेक्स्ट और वीडियो में। बाय। They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I got all this potential that's deep inside of me, but they hate when you're successful cause they try to be. They sit there being judgmental because you're trying things, and they just want you to settle and do the right thing. So get a good job, don't slack off. Wake up every morning, make a good impression on your boss. Don't do anything that I wouldn't do, and when you're making money, make sure you don't spend it too soon. Fuck that, I'll do what I wanna do. I got a different path from everyone and that includes